हाय अरे भाई, नाइस। क्या है ये सब? क्या किया ये ये? ये मुझे ऐसा बाल लग का? रहा है ट्रेंड। नहीं, थोड़ा सा ऐसा साल के सीन। साल के बीच में ऐसे थोड़ा रेनोवेशन होता है ना, तो बस वही किया। तेरे पीछे मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, व्हाइट बोर्ड मैं भी लूंगा एकदम। लाइक मेरे को भी ना वो स्टार्टअप फील चाहिए। आई वांट दैट। आई थिंक वो वाला एरिया मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग एरिया है। वहां पे जाके लाइक खड़े हो गए ना, आई ऑलवेज फील लाइक आई एम इन द बोर्ड रूम एंड आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट समझ इन द गया। बोर्ड रूम। आई आई वांट टू राइट ऑन ग्लास, बट द ग्लास, मेरे घर पे जो ग्लास है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं लिखूंगा तो थप्पड़ पड़ेगा उस पे। तो बट बेसिकली मेरे को देयर वो इज दिस, जकरबर्ग वाला फील चाहिए। जो लाइक सोशल व्हाट्स द नेटवर्क। एल्गोरिथम दैट यू रैंक, लाइक वो वाली चीज ना ईलो रेटिंग के आती है। तेरे को पता है ये जो चीज तूने मेंशन की, मुझे याद है कि आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट बिफोर। ईलो रेटिंग करके है, बट बिफोर दैट द थिंग दैट यू मेंशन ग्लास पे तुझे लिखना है। देयर इज अ मूवी कॉल्ड द ब्यूटीफुल माइंड जिसपे वो डिपिक्टेड है कि यू नो द मूवी द ब्यूटीफुल माइंड। नहीं, ब्यूटीफुल माइंड एन ऑस्कर विनिंग पिक्चर, रिंग्स अ बेल। I actually like avoid watching Oscar winning movies. Like after Slumdog Millionaire's debacle, मेरे को समझ आ गया कि भाई I don't Oh, like। I thought you were going to say Will Smith का debacle. After that, I stopped watching Oscar. ठीक है, उसके बाद but तो एक्चुअली इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। okay. Controversial, but ठीक है. But what can What I are you expect? drinking? What are you drinking? I'm drinking my solitude. I have water, but I पानी। don't have anything today. आज आज बिल्कुल चिल करेंगे। आज मेरा मूड, अभी अभी मैं वॉक करके आया थोड़ी देर। ठीक है। Mm-hmm. विद लाइक विद माई, एंड आई थिंक उसके बाद इट फील्स गुड कि यार थोड़ा माइंड को ना, मैं बहुत टाइम से अंदर हूँ। थोड़ा टाइम अभी कोविड हो गया था तो इट इज जस्ट लाइक आपको समझ आने लग जाता, आपका माइंड ब्लॉक कब होना शुरू हो जाता। तो इट वाज हैपनिंग एंड या। तूने क्या किया? Nothing. मैं तो पूरे दिन काम कर रहा था. Then I got some time. Then I started journaling. There were many thoughts going through my brain, and it needed some sort of canvas to be sketched on. So that was the whole day. कुछ 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 इज कुछ देयर एनी सोचते हुए. फॉर्मेट यू जर्नल इन, लाइक मैट का, या जैसे नहीं नहीं, आई थिंक अली का एक स्टाइल है? हाँ, आई यूज्ड टू डू दैट बिफोर. फिर मुझे पता चला लाइक फ्रॉम फ्रॉम देयर ओन फिलोसफी वो ये कहते हैं कि जर्नलिंग इज अ फ्री विल. लाइक should happen not in four walls but whatever way you want. हम जैसे बना रही है हमारा फ्री विल है. You can create it your way, that will be your free will. तो मैं तो normally like I don't have any pattern. I just have two three ways of conversing with my journal. First it will be like a third person जैसा conversation कि I'm telling something to someone but that someone is in my journal. So that's one thing. And I was talking about this beautiful mind wali thing na? Glass पे लिखना. That there were two nuances that you said, glass पे लिखना and Mark Zuckerberg. तो uh, ग्लास पे लिखना तो आई लाइक एज सून एज आई हियर कि ग्लास पे लिखना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो ब्यूटीफुल माइंड का वो सीन आता है जिसमें व्हाट ही डज, ही लाइक इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मैथमेटिशियन समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. एंड दैट उसकी स्टोरी ऐसी होती है कि वो इतना ज्यादा अपने स्टडीज में इन्वॉल्व रहता है कि ही गेट्स मैड इन द एंड, लाइक ही बिकम्स अ स्किज़ोफ्रेनिक. एंड वो स्टोरी इतनी इतने अच्छे वे में है कि हाउ ही बिकम्स स्किज़ोफ्रेनिक. उसको लोग दिखाई देने लग जाते हैं. ही स्टार्ट्स टू बिलीव कि ही सम सॉर्ट ऑफ एन एजेंट हेल्पिंग अ कंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स अ ट्रू स्टोरी. एंड वो दिखाते हैं कि इतना इतना लाइक फैबुलस मैथमेटिशियन होता है कि he starts like he whatever he sees he starts writing on it. Why? Because his mind is like way faster than his body.
तो वट एवर थॉट इज कमिंग वो कहीं उसको कहीं एक्सपिल ना हो जाए उसके थॉट्स, तो ही यूज टू राइट ऑन ग्लासेस एंड ऑल, तो वहां से एक चीज कनेक्ट हुई मेरी। एंड दूसरी चीज एज यू सेड मार्क जकरबर्ग वाली, सो द सोशल नेटवर्क, a great movie close to my favorite list. And उसमें जो वो चीज लिखता है ना, like the algorithm, the formula that he writes, it's the formula of elo rating, and elo rating was used to rank chess players when they were having a duet. तो मैंने elo Okay. rating पे काम किया हुआ, like the rating that is used in the modern world gaming, अब चेस में भी वो यूज होता है ईलो का, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स। एंड और भी बहुत सारे रैंकिंग गेम्स में यूज होता है, फोर्टनाइट एंड जितने भी वो हायरार्की वाले लेवल अप वाले गेम्स नहीं होते उनमें ईलो रेटिंग होती है कि साइमल्टेनियसली कैसे तू रैंकिंग बोर्ड बनाता है किसी भी लाइक लाइव गेम के लिए। Imagine there are 1,000 players like there are 1,000 players, 500 on one side, 500 on other side, तो एक बैटल रॉयल जैसा गेम है। How do you rank people in those 500 of the bunch? You need to have that one straight formula ना, जिससे अगर इस रेंज के नीचे है तो वो लेफ्ट साइड आ जाएंगे, इस तो रेंज के ऊपर है हाँ, तो वो राइट साइड आ जाएंगे। समथिंग व्हाट चेस प्लेयर्स गेट रैंक्ड ऑन, कि इमेजिन कि तू और मैं हैं, ठीक है, हम दोनों चेस भी बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। मैं टेनिस के वे में तुझे बताता हूँ, ठीक है, कि मान ले कि तू बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ टेनिस में, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इफ वी बोथ प्ले एंड यू विन? आई एम अ लो graded player, you're a high grade player. If we both play टेनिस का एक मैच, लॉन टेनिस का, एंड यू विन, तेरे रैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज यू डिफीटेड अ लो ग्रेड प्लेयर। बट the opposite happens. If we both are playing, I'm a low grade, you're a high grade player, and if I win, तो मेरे रैंक में जंप तेरी वजह से बहुत ज्यादा मिलेगा। वाई? बिकॉज आई डिफीटेड अ हाई रेटेड प्लेयर, हाई रैंक प्लेयर। चेस में भी right. ऐसा ही होता है। 800 लेवल वाला इफ डिफीट्स 1200 वाला, तो 1200 गेट्स रिड्यूस टू 1100, बट 800 का जंप टू 1000 हो जाता है। That kind of calculation ki why this happened, why this is happening, like how did this happen, is defined by elo rating, or the elo, like elo was the person that created this formula. And I remember when I was in my data science blues some time back, I used to do this kind of stuff, अपने अपने मॉडल को ट्रेन करके रखने का, कि as soon as the inputs come, कोई दो प्लेयर खेल रहे हैं, तो how do you manage to give one player a better rank than the other player? So yeah, it's तो इसमें इसमें दो चीजें मुझे पूछनी है। लाइक पहले तो हम दोनों ने इतना एडवांस लेवल अभी ही like we're like in the last year or something, I don't know like about you, but uh, no, no, I completed, like I'm इस done. I process am a you're proud, complete। yeah, yeah. तो इस पूरा प्रोसेस में uh, we we went through a lot of mind changes and नई नई चीजें Mm, अंडरस्टैंड करी। तो why did we leave it all? One that इसको डिस्कस करेंगे अभी। We basically left coding. We don't code ourselves. We don't create algorithms. We don't do anything which is related to that. So I kind of miss that. But we'll discuss कि हमने like अपनी अपनी stories कि क्यों छोड़ा and कैसे इंजीनियर से entrepreneurship में आए। एंड मेरी तो लाइक मैं बताऊंगा अभी थोड़ा डिटेल में। लेकिन सेकंड चीज इज दिस elo rating related to a concept called super likes? Like when I was doing social media marketing a while back, there's a concept called super likes. Basically क्या होता है कि अगर अगर मलाइका अरोड़ा खान आपको आके लाइक करे तो आपके पोस्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। एंड इट नीड्स टू बी शोन टू अ लॉट मोर पीपल। दैट मीन्स बेसिकली वैलिडेशन है, एक बड़े अकाउंट से आपको वैलिडेशन मिल रही। तो वी यूज टू डू दिस अ लॉट कि एक सुपर लाइक वाला ग्रुप होता था टेलीग्राम पे, उसमें बहुत सारे लाइक बड़े अकाउंट्स होते थे, तो हम उनसे लाइक कराते थे। ऐसे वो फालतू टाइम था। आई 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 स्पेंड दैट टाइम विद क्लाइंट्स एंड स्टफ एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन तो अभी वाला जो क्रिएटर वाला फील आया कि यार when you're creating, it's all about creating. It's about fresh topics. It's about nuance.
it's all that, and when you do that you can grow. I i truly believe that I don't want crazy numbers, but I do want ki this audience is getting scaled over time. Like basic, like कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आपको होता है यार, बिजनेस इज गेटिंग स्केल, तो क्रिएटर इज काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें ना एक क्रिएटिविटी का पार्ट आता है, तो इट शुड बी सेक्रेड। उसको लोग क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। एंड मैंने भी बहुत टाइम ऐसा किया, लाइक यू नो, आई ट्राइड इट बाय माय ओन काउंट। हम मैंने ग्रो भी किया था। I've done stupid stuff with Instagram when I was trying to grow. You know, I've done stupid stuff with LinkedIn. तभी मेरा जो ये रीच कुछ खराब है ना, कुछ प्रॉब्लम है, it is because I've actually like, मैं फक बोलने वाला था बट मम्मा ख्याल में आ गई कि वो देखते ही पॉडकास्ट। I've actually irritated the algorithm a lot with all those Yeah, engagement groups and stuff. So, surprise and me. on Twitter, like best part बताऊं, Instagram में बहुत try किया, बहुत, like I tried like hell. You don't even know what I've done. Like मैंने एक टाइम पे ऐसा था कि मैं फिल्टर लगाता था कि प्रोफाइल पे फॉलोज इसलिए बढ़ते बिकॉज फिल्टर्स होते हैं, सेम फिल्टर यूज करते हैं, मैंने फिल्टर बनाया। I've done a lot of things and still I could only scale to 1800 2000 ऐसा तक, ठीक है। LinkedIn पे I did a lot of stuff. When I came to Twitter, I didn't do anything, कुछ भी नहीं किया, just started posting my thoughts, just started posting memes and stuff and whatever excited me. Later on I started posting, कोई नहीं यार, आज चिल पॉडकास्ट ऐसे चलते रहेगा पीछे, चल। तो when I came to Twitter, it was all about posting content which is थोड़ा सा अलग टाइप का। लेटर ऑन थोड़ा सा स्केल कर लिया एंड कोई नहीं निकल सका। तो कंटेंट्स लाइक स्ट्रेटजी मेरी क्यूरियोसिटी ड्रिवन हो गई लेटर ऑन, एंड दैट आल्सो ग्रू। तो इससे मेरे को तो ऐसा लगता है, आई डोंट नो इफ आई एम सुपरस्टिशियस और नॉट, बट आई थिंक इफ यू डोंट ट्राई टू मच you grow better, because then you're trying to present something fresh, then you're actually like creating something unadulterated. तो ये बता वैसे ये कहाँ से कहाँ पे पहुंच गए मैं, बट जो ईलो नहीं ठीक है, एल्गोरिथम है, हम धीरे इज दिस द धीरे, सेम थिंग? हाँ धीरे धीरे करके आते, लाइक द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पहली पार्ट, चीज देन द थर्ड ईलो पार्ट। एल्गोरिथम पहले। हाँ, तो ईलो जो, लाइक ईलो की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, ईलो की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेपुटेशन सिस्टम्स बनाने के लिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेपुटेशन सिस्टम्स? फॉर एवरी एक्शन दैट यू डू, from a user's behavior standpoint, हम ए बी टेस्टिंग में ये चीज यूज करते हैं। फ्रॉम एनी एक्शन दैट यू आर डूइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, you have a reward system for every action that was performed during the uh, that particular range of action. जैसे तूने भी एक एग्जांपल दिया कि मलाइका अरोरा खान ने, इसी का नाम यही था ना कि कुछ और मलाइका था, मेरे दिमाग में कुछ और मलाइका चल रही है। नहीं नहीं, ये शीला शीला, हाँ। she actually follows my mom's food blog in Instagram, इसलिए मेरे को दिमाग में आया कि I've seen ओ this a अच्छा, lot कि whenever she likes, तो वो पोस्ट एकदम थोड़ा बूम होती है। I It just still want you happens, to, although it's like थोड़ा सा I, नीचे हो गया। but I just want you to uh, bring attention back to the stuff that we discovered few days back कि अब कोई भी इन्फ्लुएंसर अपना अकाउंट पर्सनली यूज नहीं करता। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स अपना अकाउंट यूज नहीं करते। इट्स द सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम। I can bet this why, because I'm in the same industry now. नहीं I'm बट building a ये कुछ लोग करते हैं जो, जैसे मलाइका है, लाइक शी इंटरैक्ट्स एंड स्टफ, तो वो रियली लोग हैं, हाँ। कुछ लोग करते हैं भाई, कुछ लोग रियली यूज करते हैं, इलॉन मस्क खुद यूज करता है जैसे। चलो, that's the validation that we need. But coming back to ELO wala part, so ELO wala part is basically creating a reputation system on any kind of platform, which is nothing but a technical way of incentivizing the user. ठीक, तो जैसे तूने कहा कि दिस इज एग्जांपल, मलाइका अरोरा खान मेरी
पोस्ट लाइक करती है एंड उसके बाद उसमें ज़्यादा हाई एंगेजमेंट आ जाती है. यस, ऐसा ही है. लाइक विन एंड लॉस में देखे जाते हैं. वाई? बिकॉज इट्स ऑल इन बाइनरी, 0 and 1 में ही कैलकुलेट करना है. तो इमेजिन की एक सेट कर दिया कि लाइक किया, तो एक बहुत बड़ा ना मैट्रिक्स चार्ट बनता है कि बड़े अकाउंट ने लाइक किया छोटे अकाउंट को, तो ये होगा. बड़े अकाउंट ने बड़े अकाउंट को लाइक किया तो ये होगा. छोटा अकाउंट बट बड़े अकाउंट को लाइक किया तो ये होगा. समझ रहे हैं? छोटा अकाउंट को लाइक कर रहा तो क्या होगा. सो इट बिकम्स मोर लाइक अ मैट्रिक्स काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, जिसमें जो एल्गोरिथम की तो बात कर रहा है कि big account make interacting with small account, that small account getting better engagement. तो yeah, it's more like कि win and losses, जो मैंने टेनिस वाला एग्जांपल दिया कि you know, if I'm a low grade player and if you're a high grade player and if I win over you, so I'm going to get a better ranking than you are because you lost to a low rank player. The matrix, remember the matrix. तो यही चीज है. लाइक ये लोग यही बात है जो तूने बोला, पार्शली उतना पे जाते हैं, बट अगेन वो रिवॉर्ड सिस्टम एक होता है जिसको रेपुटेशन सिस्टम्स कहते हैं. कोई भी प्लेटफॉर्म बनता है उसमें यूजर्स के बिहेवियर के ऊपर वो एम्बेडेड रहता है, वो बनता है. द प्राइम एग्जांपल ऑफ अ वेरी ग्रेट रेपुटेशन सिस्टम इज रेडिट. वहां पे आपको कर्मा पॉइंट्स मिलते हैं आपके एवरी इंटरेक्शन पे. लाइक अगर आपने किसी कम्युनिटी में, लाइक किसी सबरेडिट के अंदर किसी एक पोस्ट पे आपने कमेंट कर दिया ना, उस कमेंट पे बहुत एंगेजमेंट आई है, विच मींस अपवर्ड्स, अवार्ड्स, कमेंट्स, सब कमेंट्स. तो दैट particular engagement cycle gives you a reputation system which is nothing but karma points of your daily engagement या interaction. So that is the uh, thing that That is any different from likes, जो कि नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द basically हम रेपुटेशन सिस्टम. द karma points is the reputation system कि large number of people interacted with one account. I'm saying ना multiple level पे ये चीज चलता है. A very complex कॉन्सेप्ट, अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिसको हमें लाइक कवर करना पड़ता है. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होंगे. तू एक बार में रिग्रेशन बना के इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकता. तो यही है. लाइक दिस इज द बेसिक एग्जांपल. आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. द सेकंड पार्ट वाज इंजीनियरिंग वाली थिंग, राइट? हाउ डिड वी ट्रांसेंड वो फ्रॉम, first part, हाँ. हाउ डिड वी And एक्चुअली also about the creator wala thing, like we discuss creator wala thing a हम्म. lot on हम्म. our podcast. तो वो भी एक पार्ट है. पहले पहले वो कर लेते हैं कि what do you think, because अभी just थोड़ी देर पहले वॉक करते हुए I was talking to a creator who's like really big now, on Instagram, on YouTube, everywhere. Even she's going on Twitter as well. उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी अभी recently, and she is doing it full Are we time. talking about Drishti? Yes. तो उसने अब वो full time कर रही है, and she has a very clear strategy, a clear plan of approaching creator वाला thing. And I think ये होना चाहिए, because if you're going full time with the creator thing, they I so uh okay. So what I think about creator economy and everything is, it's driven by algorithms. So if you are controlled by an algorithm, it can never be a stable source of income. And I'm not saying कि यार stable source of income जरूरी होती है सारी type की उसके लिए, but it's about, do you think you have it in you to hook people on and gather their attention for a longer or shorter period of time? uh so like just to a point that you can monetize over them, or you can engage them through your intellect, your humor, your whatever entertainment जो भी आप कर रहे हो, to a point कि they maybe pay for it, or brands pay you for their attention. uh, that is something which needs to be understood. And
योर क्रिएटरशिप पूरी इज अ प्रोडक्ट, तो जो कि एक्चुअली आज मेरे को समझ आएगी यार क्रिएटर कैसे करते हैं, लाइक हाउ डिफिकल्ट इट इज, एंड आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, लाइक कि आपको इतना हुक करना पड़े किसी को लाने के लिए, एंड यू लाइक देख वन पार्ट इज कि जब न्यूज़पेपर्स थे या कोई भी लाइक बिफोर बिफोर ऑल दी सोशल मीडिया, you still had to hook people on to read your content, to consume your so if that thing does not change and algorithms just work in your favor to like give you more reach, like things which are popular वो ही चलती है अभी, ठीक है, पॉपुलर वो चीज नहीं होती जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट होगा। मैं बस ये सोचते रहता हूँ कि यार इसका मतलब ये है पूरा ओवरऑल मैं बता दूं, for a creator like Prakhar or like any creator, like high quality creator, even like us, it's very difficult to take it as a full time job। ठीक है, हमारे अपने काम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू दिस एज अ हॉबी बिकॉज हमें मजा आता है। वरुण माया कैन डू दिस एज अ हॉबी बिकॉज ही डजंट नॉट केयर कि यार डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है, बट like hustling for that distribution is very tough, uh, not because बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए इसलिए भी है because even if you're good sometimes you don't get to people, है जैसे प्रखर is like working very hard on this and his audience is extremely loyal, so he's इसका उसका creator ना dense है, people know about him and उसका जो creator का scene है पूरा dense है, but one more thing which he mastered was initially, I don't know if he did that intentionally or not, I don't know like is this a good strategy or not, but initially what Prakhar did was he kind of created videos which were reaction videos to other videos and उसके जो रिएक्शंस थे उस पे वो एक्चुअली बड़े ही इंटेलेक्चुअल थे, बाहर से आउटरेजियस लगते थे, तो he did a good job with that and everybody I think discovered him because of those videos and then फिर धीरे धीरे उसके पॉडकास्ट पे उसका इंटेलेक्ट और फिर चलने लग गया। तो सब कंटेंट क्रिएटर सब इंटेलिजेंट कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे नहीं करते, तो वो बहुत छोटा अकाउंट रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा छोटे अकाउंट को मोनेटाइजेशन डिफिकल्ट है, लेकिन स्केलिंग में मोनेटाइजेशन हो जाती है डिफिकल्ट। आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग विद ओएमटी की, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी की ultimately we don't want to monetize over them, it's more like we आई want थिंक हमारा जो विजन था वन मोर थिंग के लिए, वो जिस ने इस लाइन को क्रिएट किया है उन्हीं से डिपिक्टेड था। लाइक यू वर्क ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड देन smoothly transition towards the technology part. Talking about Steve Jobs and जैसे बहुत सारे पॉइंट्स तूने बोले हैं जो अप टू अ मार्क रियलिटी ही है। जैसे वन ऑफ देम बीइंग की algorithm किसी का नहीं हुआ, like that's the brutal truth that everybody needs to know। आप कितने भी बड़े क्रिएटर हो जाओ, algorithm किसी का नहीं है। That's why it's called an algorithm। It operates in uh, silos, एकदम अलग एंटिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि द पीपल हु देख, दो टाइप के क्रिएटर्स मैंने लाइक सेगमेंट किए। एक जो साइंटिफिक कैलकुलेटिव अप्रोच लेके कंटेंट क्रिएशन को चलते हैं, और एक जो सेंटिमेंटल एंड इमोशनल वैल्यूज को लेके चलते हैं। ठीक है, देयर आर टू सेगमेंट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स इन दिस वर्ल्ड। वन इज कैलकुलेटिव एंड द अदर वन इज सेंटिमेंटल। एक साइंस बेस्ड अप्रोच रखते हैं हम साइंस की तरफ से, एंड एक जो है इमोशनल बेस्ड अप्रोच रखते हैं। जो अब इसके लाइक इन दोनों ब्रांचेस को ना, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो पता होने चाहिए। जैसे when I talk about the emotional side, तो यहाँ पे द बैंड वैगन व्हील जो है वो
हमारे हाथ में नहीं होता. Like if you are a creator who is emotionally driving the content, it's never in your control. It will always be how people are going to perceive it. अभी यहाँ पे आर्गुमेंट आ जाएगी कि कंटेंट तो एवरी लाइक कंटेंट इज द डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ द पीपल हु आर कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट. हमेशा यही है, मतलब इस चीज पे लोग यही आर्गुमेंट करेंगे कि जो कंटेंट है वो लोगों के पास है, वो लोगों के हाथ में कंट्रोल है, वो देखेंगे तो तुम्हारा कंटेंट चलेगा. डजंट मैटर कि तुम इस साइड में उस साइड में, यू आर रॉन्ग. जो अपना कंटेंट इमोशनली ड्राइव करवाते हैं वाया द वॉचर्स, द सब्सक्राइबर्स, द कंज्यूमर्स, उनके पास कंट्रोल नहीं रहता. तो इट कैन गो ईदर वे. सो इमेजिन यूर ऑन अ बोट and you have a sail, but the wind is doing the work for you. So you have to work across the wind. You can't, like wind चल रही है तो आप उसके ना across में रहोगे तब वो आपको आगे बढ़ाएगा. अब wind के साथ चलते रहोगे तो wind तो आपको कहाँ से कहाँ उठा के फेंक देगा, where it's going. इमोशनली ड्रिवन कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही होता है, विच लाइक इन इसके अंदर ना, लाइक अगर तुझे सेगमेंट करना है कि ऐसे टाइप के क्रिएटर्स के अंदर कौन आता है, आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल वुड बी दोज हु टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, प्रोडक्टिविटी, emotion, mental health, etc., etc. The first example that I could think of which lies in the emotional side is Lana Blakely. She's on YouTube. शी इज अ यूट्यूबर एंड उसके जितना भी कंटेंट है ना, इट्स इमोशनल ड्रिवन. तो उसके जितनी भी ऑडियंस है, आइदर दे आर कनेक्टेड इमोशनली विद लानास ब्लेकली आइडियाज, थॉट्स, वीडियोस, एक ये हो सकता है, या फिर दे आर कनेक्टेड टू द टॉपिक दैट शी इज टॉकिंग अबाउट, राइट. सो यहाँ पे कंटेंट गेम इज ऑल अबाउट रेलेवेंस. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट हाउ हार्ड यू कैन थ्राइव टू बी रेलेवेंट इन दैट पर्टिकुलर एरा. लाना ब्लेकली को लोग इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज शी इज इमोशनली ड्रिवन. उसकी ऑडियंस जो है वो उस इमोशन को पकड़ के आगे चलती है. ठीक है, एक ये सेगमेंट हो गया. दिस इज द प्लेस वेयर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल एज अ क्रिएटर, बट इफ यू फाइंड योर राइट ऑडियंस, यू आर नेवर गोइंग टू डाई. ठीक है. द सेकेंड पार्ट इज द साइंटिफिक वन. यहाँ पे वो क्रिएटर्स आते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव चाले चलते हैं. Like they know exactly at what exact point what they have to sell in order to grab human attention, which sublimes into the control part. Ki they control what they want to show to the audience, they control how the audience is going to react, they control each and everything that is going to happen from the other side, which is like the consumer side. Two examples in this segment scientifically calculatively अपना content create करते हैं, one being Tanmay Bhat and the other being Mr. Beast. I can say that why, because मैं research कर रहा हूँ अभी YouTube में. I'm going to come on YouTube soon. Premature announcement. तो तन्मय भट्ट को देख. तन्मय भट्ट के बारे में जब मैं पढ़ना शुरू किया था, which was like back in 2014-15, then he started with his first startup, which was called AIB, All India Bakchod, and it was one of the most creative startups that I found at that particular time. And I think I am on route क्योंकि मुझे सिनेमा से बहुत प्यार था, है भी. एंड AIB ने वो सेगमेंट ऑफ सिनेमा पकड़ा जो मोस्टली लोग टैबू समझते थे इंडिया में. दे जस्ट ब्रोक दैट काइंड ऑफ टैबू, द बैरियर, द माइंडसेट ब्लॉक इन पीपल कि आप लाइक स्टैंडर्ड मीडिया पॉइंट पे, स्टेज पे जाके आप लाइक अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज नहीं कर रहे हो. दिस इज हाउ यू कैन यूज इट वाया कंटेंट. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट सेंसर्ड, देयर इज नो बोर्ड मेंबर्स सिटिंग ऑन इट, एटसेट्रा एटसेट्रा. तन्मय भट्ट के साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हुई. ही जस्ट गॉट लाइक he got ousted from his company, he resigned, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारे नुआंसेस के बाद लाइक एनेक्डोट्स हो गए उसके साथ, बहुत सारी कहानियां बनी है. नॉट दैट पर्सन वाज फिनिश्ड. I'll talk about, there is one more creator that comes into the emotional part which had a very great comeback. People love comeback stories. I I'll mention that. So तन्मय भट्ट के साथ कैसा था ना, तन्मय भट्ट knew one thing. He mastered उस साल में जब उसने AIB किया, he mastered the art of selling what people want but being in my control. People want fun, but they want fun at an expense where they know कि मतलब लोग वो चीज ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना जो वो कुछ नहीं कर सकते, बट सामने वाला वो करके उनको दिखा रहा है. Why do vlogs work a lot of अमीर वाले लोग? Because they have something, they're showcasing something that other people don't have. So what happens? They get a sense of
uh, you get a sense of achievement कि oh wow ऐसा कर सकते हो, तो you thrive for it. 1 crore at the age of ऐसे करके हाँ, exactly, this kind of hooky titles. हाउ आई मेड, वो बहुत इजीली ग्रो हो सकता है। Hmm. ऐसा वाले लोग, क्रिएटर्स हम जानते हैं जिनको, एंड वो काफी जल्दी कर लेते हैं। they're doing it why? Because it sells. As I said, calculative scientific approach use किया तन्मय भट्ट ने अपने आप को, like he knew कि what he can sell, but now he needed a new kind of medium. When he came back again as a YouTuber, he analyzed the whole YouTube scenario when he was like into the content creation again. This is called a comeback, a homecoming type thing. A 34-year-old YouTuber, imagine being the youth icon where the average भाई age is 20, like to दिस 23. नीड्स अ दिस नीड्स अ थ्रेड, अ 34 year old I'm writing on it. इन, That's why I'm very much bullish on it. सच्ची नहीं लिख तो, रहा है? अच्छा, हाँ हाँ, तन्मय भट्ट अच्छा, नाइस। अभी बैठ के मतलब अभी रात भर हमें हुक लिखना पड़ेगा। पे। हाँ। तो तन्मय हाँ भट्ट, जी। Tanmay Bhatt के बारे में मैं, like, why did I segment him in the calculative part? That because the comeback that he did, the comeback was so uh, serene. It was so subtle. You can never like pull that off. Something that he did, because it's like rarely ऐसा होता है. Once in a blue moon ऐसे type की किसी कंटेंट क्रिएटर की कमबैक स्टोरी ऐसे ऐसे वे में लाइक रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इतनी बहुत ज्यादा बड़ी डिफिकल्ट। बाउंस हो गया ये. What he did, he analyzed the whole room, he calculated the steps that needed to be done. He didn't, like, his forte was comedy. He came from a comedy background. उसने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ काम किया हुआ. His network and net worth both are like max of what the industry can really offer. But when he started creating content, he created content that he knew that people would watch, not the one that he wanted to showcase, right? uh, he started with gaming. Like, what, why would somebody watch a 30-year-old man playing PUBG on a phone and doing commentary around it? So yeah, it's surprisingly, when he entered, he started with the gaming part. So how did he productize his strategy? He networked with all the big gamers at that point of time when they were growing on YouTube. So what happens, like, हाँ, ये मुझे किसी ने बताया था कि like any big person, कोई भी बड़ा आदमी बनता है ना, तो वो ऐवे नहीं बन जाता. उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो उसको चढ़ा 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 के एक नोन फिगर बना देते हैं. वो बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिला, बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट किया, अपने चैनल पे बुलाया, ये किया वो किया, उनकी ऑडियंस को लेवरेज करके अपनी ऑडियंस बनाई. लाइक एक जोक चलता है, एक मीम चलता है रेडिट कम्युनिटीज में जो तन्मय भट्ट से रिलेटेड है. उसने कैरी मिनाटी के, जो एक लाइक इंडिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, कैरी मिनाटी के ऑडियंस को यूज करके अपनी ऑडियंस बिल्ड की है, which is somewhat true. Like रीबिल्ड, ओके। you can't fight it, because that is what he exactly did. बट Kariminati built a very great social capital on the gaming community, and Tanmay Bhatt हाँ, did the same. Now, when Tanmay Bhatt knew कि मेरी productizing strategy work कर चुकी है, I have enough people to follow me no matter what I post. He switched from live streaming games and commentary on games to something that he knew is very fun, and he leveraged other creators as well. Single अब handedly वो बैठ के बात करने से नाउ अच्छा, he ही brought in friends. He curated 5 चेस। comedy videos. नहीं नहीं. He brought 5 friends. He curated, he and his team curated few funny videos. And अब ये लोग बैठ के reaction देते हैं. And now his brand recall has been built by how he laughs. His brand recall is built by what kind of memes they watch. His brand तन्मय recall is built by रिएक्ट्स, Tanmay Reacts, which got him a deal on Netflix. नेटफ्लिक्स। So बट that is how he did it. बट He आई डोंट productized अंडरस्टैंड strategy. लाइक Hmm. हाउ मेनी चैनल्स डज ही हैव, बिकॉज फॉर मी मेरा जो यूट्यूब एल्गोरिथम है वो एकदम प्योर, एकदम परफेक्ट Hmm. है। मेरे को परफेक्टली उसकी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस वाली वीडियोस ही दिखती है। तो आई Honestly, by व्हेन आई Tanmay सॉ Bhat.
तन्मय की वो videos around Ethereum. I was honestly, I was shocked कि यार, Like, he many was a people don't comedian, know, right? like he's very intelligent because he has a background in And economics. I didn't even like his personality back then. So I was like, okay, अब मुझे अच्छा लगने लगा. Like, he's Hmm. different. Like, I never liked AIB का content ever. I That's thought it okay. was unfunny. I loved it. Why? Because it was like the intersection of intellect plus humor plus presentation plus articulation. It was like intersection of so many creative things that one can only find when you have that kind of team. You're trying to build something really वो really ना cool. वो ना starting point था इन सब चीजों हाँ, का. वो बहुत ही इनिशियल, एंड वो क्रिएटर इकोनॉमी जो मतलब अभी है. उसी से मुझे ऐसा बट लगता यार है वहीं मुझे से बता आया यार, है. लाइक, इवन दो I I aspire this creator wala thing. I'm like, I'm never going to make this my full profession ever. Like, I Why have to not? do something. Why not? Why not? Because I don't want to be run by algorithms. I That's the simple answer. Ki why am I building things? Because वो चीज is my own. I'm owning that. Here you have borrowed audience. Even if you make a newsletter, uh, this borrowed audience. So, and I'm not going to wait for some brands to give me deals. Although the networks that these people use are amazing now, because brand deals बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, recurring मिलती है, retainers होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे systems हैं. But there's one thing with me कि personal choices है. क्या जैसे तन्मय है, ठीक है, he leveraged his personal brand to come on Netflix के channel, and he's doing a great job, and he's getting paid a lots and Yeah. lot for it. तो ठीक है, तो okay, somewhat that when I was watching his content on Netflix, so I was like, yeah, this actually makes sense, and I was excited to be a creator. But Well, now when I met a lot of creators and I understand, they're all the time, they're basically not creators. They're they're not pseudo driven creators, like by that could be a term. curiosity. Pseudo They creators. सूडो तो नहीं है यार, देख, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे ट्राइंग टू फाइंड टॉपिक्स. ठीक है, दे दे Exactly. दे Trying to find दे आर topics. वर्क. Like मैंने कहा ना, create content creation is a game of being relevant. Like content creation is a relic of relevancy. Simple. रेलेवेंस. हाँ. अगर ठीक है, I'll complete it. What I was trying हाँ. to make, like मैं सारे chain of thoughts connect करूंगा, तो एक बार complete कर, मैं बताऊंगा हाँ. कि कहाँ से कहाँ हम जा रहे तो इट्स it's more like, now I think it's better to build something of your own. हैं. And तभी तभी like एक थोड़ा सा shift आया मेरे में recently. Um, although I've started being like more of a creator now, मैंने Instagram join कर लिया, I've started posting reels on Instagram, which I know is frustrating to you. कि how can you join Instagram? Yeah, exactly. But I'll make you join Instagram as well. So it's more like, when you're a Against my ethics, creator, against my principles. I can never. I'm more like Elon Musk. Twitter will be the you're thing that I already could on leverage. Instagram. Not my choice, not my thing. चल ठीक है. uh, mm, I started making reels on Instagram. अभी 3 ही डाली है. और भी बनाई हुई है, अंदर रखी हुई है. But मैंने इसलिए किया because यार, it's sometimes it's all about, जैसे तूने बोला, it's about relevance. You have to be present on a lot more platforms to gather attention. And मैंने गैरी वी की एक चीज ना बिल्कुल लाइक बांध ली अपने साथ, कि इवन इफ यू गेट थोड़ी बहुत अटेंशन, इट इज स्टिल वेरी वैल्यूएबल. If you get one view on your video, and you're able to hook that one person in for a very long time, that one person, and if you're very good as a creator, like, you have to be good, like, your content has to be good and nuanced and different. If you're that, then
then you can actually charge that person something in the future with obviously recurring free services जो कि आप देते ही जा रहे हो सोशल मीडिया से एंड अपने तो मेरे को ऐसा लगता है आई विल डेफिनेटली मोनेटाइज माय creator side very nicely in the future in about 6 months to 1 year, and I'm going to build this, like, because I'm going to monetize, that is why I'm building this. And now I'm like with a better strategy. But यार वही है कि it's पता है जब भी किसी उससे बात करो इन लाइक भैया आपने कैसे ग्रो किया, मेरे को भी ग्रो करना है, तो सुपर एंथुसियास्टिक। मैंने बोला आई वाज नेवर एंथुसियास्टिक अबाउट ग्रोइंग पहले तो, Exactly. ठीक है, वो तो Step one. कोई मेरे स्टेप वन, ठीक है, दैट। Second thing is everybody thinks they can be a creator. Why? Because the barrier to entry is simple. You can just start tweeting. Yeah. Huh? Can you gather the attention? Do you have the ability to turn a meme wali audience into a serious wali audience? I Did you did just that. flex it? Did you just flex Yes. what you did? Yeah. I Um, can timidly flex that because what I was and what I am, like, that's two different genres. can you turn a bot wali audience into a audience which actually loves you? Your audience, like, you're the best example, पता है इसमें। माइक्रो ऑडियंस है तेरी, माइक्रो ऑडियंस, दे लव यू। It is, and I know you don't want to be loved, but they love you because you don't want them to love you. It's a very complicated relationship which you have with your audience. Like when they comment good things under your post, you troll them literally, but they're still with you, and that is special. That is a special bond which you, and you gathered their attention. अब तू जाएगा ना, तू अपने एक बोलेगा कि यार मैं एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन टाइप का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आएंगे, बहुत लोग आएंगे। तू And 10,000 की प्राइसिंग करेगा तो नहीं, शायद नहीं आएंगे, बट तू अच्छी सही प्राइसिंग करेगा, सही से पोजीशन करेगा तो आएंगे लोग। एंड दैट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस, नथिंग एल्स। उसके अलावा लेवरेज है, लेवरेज इज द गेम। लाइक अभी हमारी, आई थिंक अभी हमारी OMT वाली कम्युनिटी में वी वर हैविंग अ चैट ना, they said कि if you want to be anonymous on Instagram, like why not just start another anonymous page and start posting things with the mask on or with whatever. मैं बोला because that won't give me leverage exactly. right now. Even if I don't like it, because of my follower count, I'm able to talk to a lot more people. Like I'm able to message anybody in this, almost anybody, and they respond to me. तो उसका एक फायदा है, बिकॉज हम स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में, स्टेटस ड्रिवन इकोनॉमी बोल रहा था, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, उसका फायदा उठा रहा हूँ बस। आई हेट दैट फैक्ट कि यार दे इंटरेक्ट विद मी बिकॉज ऑफ माय फॉलोअर काउंट। लाइक it does not make sense. It just sucks if you think about it, because I think about it all the time, again and again, whenever I'm like, if I'm talking with a big YouTuber, I'm like, this person is talking to me because of some bullshit metrics. I don't like that. So, but it's leverage. You can use that. You can get them in conversations, because people, intelligent people यहाँ पे जो है, you can, I don't know यार, but I'm still in ना अभी वो वाली phases. This is the perfect podcast time पता है मेरे लिए, because अभी मेरी इस चीज से related सोच बहुत ही ना change हो रही है। तो अभी तू देखेगा, अभी ये है, कुछ 2-3 हफ्ते बाद हम फिर से करेंगे, करते रहेंगे, तू देखेगा ट्रांजिशन देखेगा, because I'm still forming my thoughts. I've started thinking deeply about this, all this, and like how I'm going to use it, because I'm part of that society, but I'm not. I'm a misfit in that society. How does this misfit actually try to build something out of it? I don't know. पता नहीं। हाँ नहीं, मैंने मतलब कोई you need बात to की, give, उसका कोई सेंस भी बना अभी, बट मेरी थॉट्स एकदम अभी जम्बल्ड अप है इस चीज को रिलेटेड, तो मैं and बस वैसे बोल होनी रहा भी हूँ। चाहिए. Like it's better to weave out something from a clouded thought rather than being very shallow and creating noises. That's what I believe in. And तूने बहुत सारे, जैसे जैसे तूने मेरे अकाउंट का एग्जांपल लिया, अब मेरे अकाउंट की बात क्या है कि मैं हर ब्रैकेट में फिट होता हूँ. तेरा अकाउंट का सोच के हंसी आ जाती है। इट इज अकाउंट दैट यू नीड टू लाफ ऑन, क्योंकि जिस वे में, मतलब इट्स आई
तेरे I लोग can तेरा कंटेंट देखना चाहते हैं, खुद तक पहुंचता नहीं है बस हाँ ये वही है। मतलब they wait कि like thirst में बैठे रहेंगे but it never reaches and quenches their thirst. The the thing that you said कि मेरा अकाउंट एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्यों है? क्योंकि हर ब्रैकेट में फिट हो रहा है। हाउ? अब तो अगर बोले कि आपके पास अगर एक लॉयल ही सब्सक्राइबर है या एक ही फॉलोअर है, उसको आप अगर दूर तक रिटेन कर सकते हो, दैट्स द सक्सेस ऑफ एनी कंटेंट क्रिएटर। आई नेवर कॉल माई सेल्फ कंटेंट क्रिएटर, आई विल नेवर बी। व्हाई? कंटेंट क्रिएटर के साथ ना ऑब्लिगेशन है कि आपको बनाना है, व्हिच आई थिंक इज लाइक अटर बुलशिट। रणवीर मेरी भैया नाच के दिखाओ, वही है। माए हाँ, ये वैसे ऑब्लिगेशन हो जाते हैं ना, लाइक आपका आपका कुछ टाइटल एंटाइटल्ड हो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज से, so people are going to expect things out of you in that particular manner which makes you lose your own authenticity. ठीक है? so So what do you want to position yourself as, like a person who expresses thoughts ऐसे? that is how it needs to be. As I said, मेरा अकाउंट क्यों उस ब्रैकेट में आता है, क्योंकि मैं जैसे मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग and if that particular thing that needs a kind of motivation, a push, if you need a motivation, then fucking don't do it. And secondly, if it's not an effortless effort, fuck it, it's not for you. That is what I believe in. ये मैंने अपनी एफर्टलेस एफर्ट, इंजीनियरिंग, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कॉइन किया वर्ड। बट सरप्राइजेस। काफी लाइक अपने आप ही तेरे पास था ये वर्ड। हाँ, I I always appreciate the fact कि गैलीलियो ने बहुत सारी चीजें की थी. He was like founders of many things, but Isaac Newton gets awarded for every other creation that was based on Galileo's findings. So yeah, this is how it is. You might think of it, but we shipped it. So the people always appreciate who shipped it first. But तो इंजीनियरिंग point वाला बात कर रहा था कुछ? हाँ, the point being कि जैसे आप अगर किसी भी लाइक आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, मैं ना बहुत ज्यादा एकदम नीच डाउन करने की कोशिश करता हूँ. व्हाई? बिकॉज आई बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द उबर मेंश. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो मैं बता देता हूँ, मैं इतने दिन से बस स्ट्रैटेजाइज ही कर रहा हूँ कि मेरा कंटेंट क्या होगा, मैं कैसे प्लेस करूंगा, क्या होगा. माय फर्स्ट एवर वीडियो इज गोइंग टू बी टाइटल्ड द उबर. It's not related to the brand that you might be thinking of. It's a philosophy that has been introduced in like 1800s, which gives a concept of सुपरमैन, सुपर ह्यूमन, कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं. जब आपसे कोई ऊपर नहीं है तो कुछ भी नहीं है. आपसे कोई नीचे, आपसे सब नीचे है. इसका मतलब देयर इज नो वन एट योर लेवल, देयर इज नथिंग अबव यू, which makes the whole conjugation of nothingness a reality for that particular Uber. ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट है ना, मैं चाहता हूँ लोग इसी वे में देखें. लाइक द मोमेंट दे रोमांटिसाइज दैट, हम उसी ट्रैक पे जा रहे हैं विच द बॉलीवुड वाज 50 years ago. We were idolizing that kind of shit, and then that shit is going to mess up with our brain. And what will happen in the end? We're going to just cuss it out, एग्जैक्टली। we're going to frustrate it out, but we can never get out of it. Like, you can't romanticize a personality just because they are out there and you're not. Focus on what they're delivering, focus on what they're selling, focus on what they have to offer you. If you can learn at someone else's expense, the philosophy that I teach everybody, preach everybody, if you can learn at someone else's expense, that's the most beautiful thing and the most beautiful way of learning in a pragmatic world. राइट। कंटेंट क्रिएशन के साथ भी ऐसा ही, लाइक इसको ना एक शेल्टर दे दिया है, व्हिच आई डोंट बिलीव नीड्स अ शेल्टर. कंटेंट क्रिएशन एवरी अदर पीस को कंटेंट बोल देता है, व्हिच हैड अ बाइफिकेशन बिफोर, एंड नाउ इट्स लूजिंग इट शाइन. व्हाई? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज इट. न्यूज़पेपर वाज a medium to give you news. Now it's media content. News channels on TV was supposed to give you video formatting news. Now it's video content. Music playing on the radio is now live commentary content. So the moment you try to generalize any kind of actionable stuff that was happening before, and now it's losing its shine, how do you like envision कि इनकी लाइफ स्पैन रहने वाली है?
बिकॉज आई टेल यू, ठीक है, अब मैं एक पॉइंट पीछे जाता हूँ, देन आई जंप अ पॉइंट फॉरवर्ड, वी कैन पिन इट डाउन राइट हियर, अ थंब पिन. तो मैं पहले ये बोल रहा था कि प्रोडक्टाइज तन्मय भट्ट एक है, मिस्टर बीस दूसरा है. मिस्टर बीस ने अल्गोरिथम को साइंटिफिकली स्टडी करके अपना प्रोडक्ट प्लेस किया, विच इज हिज कंटेंट. एंड द रीजन ऑफ हिज सक्सेस इज वेरी सिंपल. अल्गोरिथम क्या चाहता है, तुम वो दो. लोग क्या चाहते हैं वो अल्गोरिथम से ही समझ लेंगे, राइट. मैंने बहुत सारी चीजें समझी हैं यूट्यूब पे आके कि अ, यहाँ पे अटेंशन का गेम है, रेलेवेंसी का गेम है. इफ यू कांट हुक पीपल यू कांट बी एनीथिंग, एंड दैट इज ट्रू. नो मैटर हाउ इमोशंस का फिलोसफिकल यू गेम है, कैन बी. हाँ. like No matter how manipulating how your emotions. how rigid you are with your own pursuit, on your own presentation, you will be fucked if you're not bowing in front of the algorithm, which gives me a kind of jolt, क्योंकि मेरी philosophy तो ऐसी है कि भाई you can't bend in front of the algorithm. So what's next? So like what are you changing with for that? The way people consume content. Like if they are here, if they click on a video saying कि this is how you should detox from social media, like imagine, hypocrisy nahi hai. You're coming on a social media, searching for a video that is about detoxing from a social media, spending a lot of time on social media by finding out how to detox from social media. This particular behavior can be observed and used as a reverse psychology to the people. You change the behavioral consumption behavior change kar do logo mein, and you don't have to do anything. The algorithm will do everything for yourself. Create the Right. most darkest video, create the most depressing video for people, and that will trigger an emotion some point in their consumption life, which is going to make them change the behavior that they had. And that kind of content is calculative, scientific, which many big YouTubers are doing. Many great YouTubers who are trying to uh, scale themselves in a very rapid level are doing. So that's that. Two segments of YouTubers, content creators per se, जो like लोग समझते हैं, इमोशनल एंड साइंटिफिक. अब हम आते हैं वो चीज पे जिसको मैंने पिन कर दिया, ठीक है. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट रेलेवेंसी. तो क्या होता है ना कि आप किसी Do लाइक you want to एज ए, stay relevant? तेरे को रहना है, like तेरे को, मेरे को ना अब ऐसा हो रहा है या तेरे को भी हो रहा है क्या, like when you say that you don't want that title content creator, you there has to be some time when you stop doing that, like you stop doing it for the end goal. Like तू suppose तू artist है, ठीक है, तू अपनी आर्ट से ही पैसा कमाना शुरू हो जाता है, तो तू अल्टीमेटली थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर लेता है अपने आप को. डू यू वांट टू डू दैट? बिकॉज हमारा मेन काम ये है नहीं, हमारा मेन काम कोई बहुत ही अलग चीज है जो कि शायद थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो, थोड़ा बहुत हमें बेनिफिट कर दे. लेकिन डू यू वांट टू डू दैट? लाइक डू यू वांट टू like go through that pain of constantly trying to be relevant? Because today, after that talk, I was like, okay, like even though the barrier to entry is easy, there's no barrier to entry. uh this shit is tough. I think I got lucky, it and stuff. I'm not gonna get lucky everywhere, and I'm gonna use this luck to spread across. Okay, Yeah. I got lucky, I got the initial push, and now I'm gonna use that. If a person is strategizing this, can they do it? I think because you run a marketing or वो वाली company, I think you can answer this better. And second, इसी में थोड़ा सा part, like तेरा पिन वाले को वापस जाते हैं, उसके बाद कि should a person do it? Because I'm going to make this a clip, and for all the people who aspire to be content creators, uh, For all the content should a creators, person yeah. do it? This is very tough. Like these people go through a tough time building this. It's a lot of hard work, and honestly, I would never do like मेरा तूने तूने मेरी रील्स देखी ना, मैं ऐसे बैठता हूँ अपने लैपटॉप के सामने and I just speak my mind. That's it. That's my content creation. I don't put in too much time, and I got around 10,000 views within a week because of that. Free reach plus already built brand. ठीक है, वो भी फायदा होता है. ठीक है, I think that I don't know, are the are the algorithms interconnected or something?
और देर इज Hmm. सम ब्रांड रिकॉल कि यार ये बंदा हाँ मैंने देखा हुआ है, चाहिए डीपी हाँ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट यू कैन गेट समथिंग, बट So आई एम नॉट गोना गो थ्रू द पेन. तू I बता. think uh, the question, let's answer the question first. Should people become a content creator? Should Content they creator. follow this kind of path? The perfect answer to this exists. Like if you're thinking it does not exist, it actually has a very uh, sculpted stance of if you should do it, or are you even like compatible to be that kind of content creator that you aspire to be. First and foremost is कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, like are you like, should you become a content creator, this is the vital question, right? You should start. सोच ले थोड़ा. नहीं, you should start at that particular point where this all came into your mind. Like you should start with that. You should go back, reset yourself and think. क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है, लाइक मैंने अब से ऑब्जर्व किया हुआ है कि कंटेंट क्रिएशन एज अ चॉइस तो बचा ही नहीं है अब. Like most of the people think कि content creation is a habit, it's a must. Why? Because you have something to offer to other people. Hell no, that is not how it works. That becomes an obligation, that becomes a compromise to what uh, content creation was on the first place. आपका क्यू होता है किसी चीज को करने का ना, क्यू सेट होता है. लाइक इमेजिन दिस इन अ ट्रेन के वे में. लाइक पिक्चर दिस एज अ ट्रेन, देयर इज एन इंजन, there are few containers, like like bogies, and then there's the end part. Most of the people try to jump on a running train, calling themselves as an aspiring content creator, which is like the most bullshit thing I've ever heard. क्योंकि आप ऑब्लिगेटेड होते हो. एंड इस चीज का लाइक ये जो ट्रेन वाली चीज है ना, इसको कैसे मैं रियल लाइफ में बता सकता हूँ. Not calling out anybody, but if it's relatable, it's relatable, because this is the problem why, and that should answer the question, should you be a content creator or not. Most of the people, most of the content creators are like entitled themselves as content creators. What do they try to build the distribution first, which is nothing but a social capital. They forget to invest in their identity capital, which is the high quality type of content that you're trying to cater the people around you with. ठीक है. लोग स्टार्ट करते हैं फॉलोअर्स से, लोग ये नहीं स्टार्ट करते कि मुझे किन लोगों को सर्व करना है. अप्रोच वन. ठीक है. दैट्स हाउ, लाइक दिस इज हाउ द मिडवे जर्नी ऑफ द ट्रेन स्टार्ट्स. हाउ आर यू jumping to like level 69 or 70 by being on level 0. ऑब्लिगेशन वाले डिसीजंस कंटेंट क्रिएटर्स बोल के लेते हैं, which is nothing but building on the distribution, which is like social capital. And as soon as they get the social capital does what? It validates whatever idea that you have. And from the fundamentals, any social capital will validate that you're now ready to serve people. Why? Because you have a distribution under your control. यहां से बैठ के अब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, this kind of queue is wrong. Just because you have followers, you can't become a YouTuber. Just because you have like decent number of followers, you can't um, talk whatever you want to. Just because you have followers, you can't do something to please other people. That is not content creation. It's just enslaving you into your own thought, which is like not very easy to escape. So the queue, which is like jumping on the running train, is wrong. So if you are doing that, yeah, if you're about to do that, thinking, if your mindset is like this, ki, when I'll have decent number of followers, then I'll start. Don't do it. That's the most poisonous thing that you can do. If this is what your queue is, then you can never be a content creator. ये हमेशा obligation में रहेगा आपके साथ.
आप हमेशा चेस करोगे सोशल कैपिटल बनाना, यू विल नेवर इन्वेस्ट ऑन आइडेंटिटी कैपिटल विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू. हाउ? एज आई मेंशन कि कंटेंट क्रिएशन इज अ गेम ऑफ बीइंग इन रेलेवेंस. इससे दो चीज इफेक्ट होती है, कंटेंट क्रिएटर की लाइफ एंड द कंटेंट कंज्यूमर की लाइफ. मान ले कि तू, फॉर एग्जांपल आर्यन कोचर जो है वीडियोस बनाता है ऑन ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ मेन. ठीक है, तो जो लोग उस मोमेंट पे मेंटल हेल्थ के डिटोरिएशन में होंगे या सफर कर रहे होंगे अपने मेंटल हेल्थ के जर्नी में, दे विल कम टू योर कंटेंट. So basically, imagine you had a social capital, you monetize, you tried to like work with your distribution, you created content around this. क्यों? क्योंकि तुझे लगा कि अब मेरे पास लोग हैं तो मैं उनको बता सकता हूँ, लोग देखेंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा. नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर का यही माइंडसेट रहता है. चेंज माय माइंड, यू कांट फाइट मी. And the second thing happens ki now that you have people watching you, so people are going to come onto your channel. Why? Because other people are watching you. Obviously you leverage that kind of audience. That process is not wrong, but the cue that you chose is wrong. People came into your platform. Why? Because they were suffering from some kind of mental health, men particularly. So those men will come, they consumed your content, you're relevant at that two scenarios at right now. two segment में तू relevance है उनके. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई उनको तो वो तेरे पास आए, तेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब वो बाहर निकल जाएंगे उसके, they will leave your social capital built content. Why? Because उनका काम हो गया. You started with obligation, they started with a problem. दो प्रॉब्लम थी ना, कंटेंट क्रिएटर की भी एंड कंटेंट कंज्यूमर की भी. This got solved. So now when they consumed your content in those two segments, you were relevant for them in those two segments. Now they moved on. Your metric of being relevant in the content industry reduced by one. Why? Because you started with an obligation of working on the social capital. So now coming back to the question of should you choose to be a content creator, if that is your cue, if that is how you're thinking of doing it, I don't think so your ever will go anywhere. You'll have quite few quick successes, but that's quick. So if anything you gain is very quickly, you fall very quickly. It takes a lot of effort to climb a mountain, but it takes only 2 trips to fall down with like 2x force. So that's the answer to if you should be a content creator. Should you be aspired to be? Should you? Don't become a content creator. Like Like, even जैसे though it's example, like I can give my example because as I said, I come in, my profile comes in every bracket. I never aspire or choose to be a content creator. People perceive me as that, and I always break them down. I brutally destroy them with that particular notion or the uh, image that they have of me. Like, पता आप है एक बार कोई पर्सन ने मेरे से पूछा था कि व्हाई डू यू डू पॉडकास्ट with Vivan, like he has less followers. मैं बोला, you know how what kind of capital that he's building, social capital, the kind of connect he has with people, that's unbeatable. And the kind of intellect he has, that is what I'm looking for. Like if I'm running a company, which is OMT is a company, and I'm choosing a co-founder or co-host, whoever, I'm looking for that intellect, not कि यार फॉलोअर काउंट कितनी है. ये बेवकूफ वाली चीजों से अब बाहर आना चाहिए लोगों को. यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, सीरियसली बहुत हो गया. I gave everybody a short clip to become viral. Like technically, if we if we put it into देख, the हमने right, पिछले वाले में पूरे टैक्टिकल एडवाइस दी कि हाउ टू गो वायरल. आज वाले में हम बोल रहे हैं कि डोंट बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. वी आर हम अपने ही खुद को वो कर रहे हैं. बट दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू. I व्हाटएवर यू think that सेड is इज परफेक्ट. because this वो is जो how I've एप्लीकेशन है ना, observed. Like I've seen so many people. Like I feel very pity for them. How can you do that? Just because you have एग्जैक्टली followers, you're going to create something. Like, that's the most एग्जैक्टली. shallowest thing I've ever heard. चलो, चल. नहीं, बट यहाँ पे एक और चीज आती है कि व्हाट डू वी वांट टू डू. लाइक तू अपने बारे में Hmm. बताइयो, मैं अपने बारे में बताता हूँ. लाइक
लाइक आई थिंक अभी वाले के लिए 5 मिनट्स बचे तो हम ये कर सकते हैं डिस्कस। तो uh, मैं चाहता हूँ कि मैं कैसा आई डोंट नो क्रिएटर है, जो भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता नेमिंग से बहुत ज्यादा, बट आई वांट टू क्रिएट एज लाइक क्रिएटर की रियल एसेंस में, लाइक उसका नाम क्रिएटर है क्योंकि कुछ बनाता है वो, ठीक है। एंड आई लव राइटिंग एंड आई लव रिसर्चिंग एंड आई लव, आई डोंट कॉल इट क्यूरेशन, whenever someone calls my creation a curation, i just I just ग्रेट lose my shit, क्यूरेशन but सर ऐसे लिख के जाते हैं तेरे। मेरे में भाई इतना गुस्सा आया था ना, बट रिगार्डलेस I actually want to continue doing that. I want to expand upon it. I want to do YouTube as well, like whatever we are doing right now. That I want to do a podcast. I want to do reels. I want to do LinkedIn, but I want to do it अपनी pace पे, अपने I don't I aspire to grow. Obviously, growth हो जाएगी. If there's no growth, that means your content, your quality is not affecting a lot of people, and वो share नहीं कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा. But I want to grow, and I want to see कि यार I I just want कि यार लोग actually पसंद करें content को, not just because मैं regular में उनकी एक वो बनी हुई है, मेरी भी obligation है, मैं बना रहा हूँ, उनकी obligation है वो like कर रहे हैं, मेरी obligation मैं हर दिन जाऊँ बनाऊँ, ऐसा सीन ही नहीं चाहिए. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल बिकम कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज उनको पता है यार अब अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा मेरा, लाइक आई कैन लिव द लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड ऑल. मेरे को नहीं जीना वैसा. आई वांट टू क्रिएट फॉर क्रिएटिंग, दैट्स इट. इफ आई गेट सम मनी आउट ऑफ इट, ओके. इफ आई डोंट गेट सम मनी आउट ऑफ इट, ओके. मेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. आई एम नॉट बाउंड टू द एल्गोरिथम, although I'll try to feed the algorithm once in a while. I'll try to collect all my thoughts, post it at a similar time every day, ताकि मेरे को ज़्यादा maximum reach मिले, just to just to get like reach more people. जो जो नॉर्म्स वाली चीजें हैं वो मैं फॉलो करूंगा थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं अपने आप को चेंज नहीं करने वाला, मैं अपनी पर्सनैलिटी को नहीं चेंज करने वाला इस बकवास चीज के लिए. तो सच्ची में इफ यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर ना, तुम इतने सुपरफिशियल हो जाते हो ना, आफ्टर अ व्हाइल यू विल अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड सक्स. इट्स लाइक दैट फैशन वाला वर्ल्ड, वैसा बन जाता है. Where everything is makeup, the moment the makeup, no one knows. The moment the makeup wears off, hi, who are you? वैसे वाली चीज हो जाती है. And and I ठीक है. see good content creators like Lex Fridman. ठीक है. I ठीक है. Nice. ठीक है. You want to become something like that, like अपना I'll काम ठीक है. करो We and can अपना काम करो and साथ में you have conversations, you have things going on, you have everything going on. And कीड़ा आ गया था ओ भाई. तो हमें लाइक रुकावट के लिए खेद है क्योंकि बग मैच में अटैक हो गया था. बग अटैक हो गया था. बट बट या कमिंग बैक टू क्या था, मुझे एक दे ना, वो दे, रन अराउंड दे कि भाई तू क्या बोल रहा था, मैं क्या बोलने वाला भाई था. रन अराउंड ये कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हुई क्रिएटर वाले उस सब सीन से. हम्म, एंड पता है अभी रिसेंटली हम ओएमटी वाली कम्युनिटी में बात कर रहे थे कि लाइक I want to do this, I want to do that, वगैरह वगैरह. And then one of the members said कि like you're not making a hype anywhere, like you're not present everywhere, you're not that कि यार जैसे एक राज शमानी का एक फेज था कि he had that एकदम boom वाला, and like everybody's talking about this new content creator. And मतलब some people don't even want that. Like I want to slowly grow with my audience. I love getting 100 people who are liking my content. I don't want more than that. ठीक है. मैं ना बहुत ही सेटल हो गया हूँ अब इसमें. I just love this कि यार 32 लोगों को मेरा पसंद आया. Can you imagine? आई डोंट नो, ये ग्रेटिट्यूड इज टू एक वीक, आई डोंट नो ये कौन सी फिलोसफी है, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये बड़ी ये वाला पार्ट अच्छा लगता है कि यार 32 पीपल लाइक, चाहे मेरी ऑडियंस इतनी बड़ी उसमें से एंगेजमेंट कम आई, लेकिन 32 पीपल लाइक. आई वॉज एट 20 फॉलोअर्स व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग माई ओन कॉन्टेंट. ठीक है.
I came from that, and like reaching to a place when 32 people care about you, they read the content, they It's actually intentionally liked it. और whatever be the 2000 हो गए तो reason. क्या ही बात है, लाइक हाँ, 2000 हो गए, 3000 हो गए, 23,000 लाइक्स आ गए, तो पागलपन मच जाता है मेरे दिमाग में कि यार व्हाट डिड आई राइट कि इतने लोगों को इफेक्ट करा. That is the feeling I want. That is a feeling of like I love. Like तभी तो करते हैं हर चीज. मुझे और कुछ नहीं चाहिए इससे. थोड़े साधु मेरी संत वाली बात कर दी मैंने, बट नहीं that नहीं is true. मेरी That is पता true. है मेरी कंटेंट क्रिएशन पर से अभी जिसको मैंने इतना बोला उसके उसके बारे में मेरी क्या थिंकिंग है, मैं नहीं मानता कि मैं जो भी क्रिएट कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो कंटेंट क्रिएशन है, इस शेल्टर में आती है नहीं. भाई तो फिर रात में हुक बता क्यों भेजता है? भाई हुक बता सुबह डालना है. आई थिंक देयर इज वन थिंग, लाइक आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लो, इफ इट्स नॉट पैकेज्ड विद अ गुड मार्केटिंग स्टाइल, no matter what your product is, it's going to like shit himself, like shit itself, a very very deliberate way में. पाम फोन करके एक फोन था जिसकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट थी, लाइक वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फोन फिटिंग इन योर पाम, सिंपल सी मिनिमलिस्टिक फोन जिसको कहते हैं. इट गॉट फक्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ बैड मार्केटिंग. तो Right. मेरे मार्केटिंग एस्पेक्ट से मैं लाइक वो चीजें करना चाहता हूँ जिसको लोग स्टेटस गेम समझते हैं. इट्स नॉट दैट. It's just a simple plaintive marketing tactic which I perform, which is which is required for you to have that kind of. Creating a good product and marketing it well. इसी चीज पे मैं आ रहा था बाकी, लाइक मेरे लिए जो ये जितने भी है ना, मैं इसको कंटेंट तो नहीं बोलता हूँ मैं, मेरी ये लाइक रॉ ब्रूटल थॉट्स हैं जिसको मैं लाइक लिखते Scribblings. रहता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो चीज मैंने लिखी हुई है वो इतनी कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है, वो दिमाग मेरा ऐसे चलता है. Like if you just like go into my I can relate. journal, you'll see कि it's a havoc, it's like a chaos भरा हुआ है उसके अंदर. एंड उसमें से कोई एक टर्म उठा के या एक चीज मैंने उठा के लिख दी, बिकॉज दैट इज हाउ आई थिंक. एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है वेल. सही है, सही है, बट सही है. ये मेरा कनेक्ट आ रहा है यहाँ पे. हाँ, तो मेरे लिए हमेशा से कैसा था ना, जस्ट बिकॉज फ्रॉम द अर्ली एज ऑन आई अंडरस्टूड वन फिलोसफी विच वाज ऑफ एक्सक्लूसिविटी. एंड वो एक्सक्लूसिविटी आपके एक्सप्रेशन इमोशन में दिखती है. आप आईफोन पकड़ते हो अपने हाथ में, हाँ, वाओ, ये वाली फील आती है. वो फीलिंग ऐसी होती है कि इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, राइट? Using any kind of Apple product on the initial days, the feeling is Yes. phenomenal. You can't express it to anyone. Even Why? Because later. वो Even वो later. अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, कि ऐसी इनेट एक्साइटमेंट होती है जिसको आप शेयर नहीं कर सकते, बट यू हैव इट एंड इट स्टेज विथ यू फॉर लाइफ. यू हर दिन. कांट. हर दिन. हर दिन. मेरे हर दिन साथ मैं हर दिन जब मैक खोलता हूँ भाई, ऐसा फील आता है रश. डंग करके जो एकदम स्टार्टिंग में आवाज खुलती है तू फ्रॉम दैट. शट डाउन करता है. भाई वो आवाज सुनने के लिए ऑब्वियसली हर दिन से डंग करके. I love Apple sounds because it has been created particularly for particular. तेरे को पता है कैसे कैसे, मतलब अब ये साउंड वो ऐसे रिकॉर्ड करके बना इस दे. पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे अलग हाँ. एपिसोड डिटेल में. दो. मेरे लिए कैसा कि चलो मैंने यू वांट टू थॉट इम्बाइब स्क्रिबल. दैट. हाँ, यू so वांट टू see, look इम्बाइब look दैट. I'll tell you what I'm trying to imbibe with this. हाँ. मेरी हमेशा से जो वो एक्साइटमेंट वाला फेज रहा है ना, जो मुझे होता था, जो पर्टिकुलरली मुझे एप्पल प्रोडक्ट्स टच करने से होता है. और वो क्यों होता था? वाई? बिकॉज एप्पल सेगमेंटेड देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ पीपल कि वी आर प्रीमियम, वी आर एक्सक्लूसिव, व्हिच आई हैड. लाइक एप्पल के पहले इट वाज फॉर ब्लैकबेरी. मैं ब्लैकबेरी को ऐसे देखता था कि ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट फॉर द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएटिव्स, ये सिर्फ बिजनेस लोग यूज करते हैं, मेल एंड व्हाट नॉट. बहुत सारे गिमिक्स बेचती थी ब्लैकबेरी. Then Apple came along. Even though the company changed, the feeling remained the same. कि वो जो एक वाओ फैक्टर होता है ना, मैंने कहा वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट स्टेज विथ यू फॉर लाइफ. सो मेरा कभी भी शॉर्ट टर्म गेम वाला प्लान था ही नहीं. आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु, क्योंकि
जोकर के साथ बहुत सारी फिलॉसफी अटैच होती है ना मेरी, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो बहुत सारा क्लाउडेड होगा, बट जोकर की मदद से इट बिकम्स वेरी इजी टू स्ट्रीमलाइन दैट थिंग. सो कमिंग फ्रॉम देयर, मेरा कंटेंट हैज टू बी, व्हेन आई से कंटेंट इट्स जस्ट नथिंग बट थॉट्स. मेरे थॉट्स वैसे वो वाओ फैक्टर देने चाहिए, एंड वो देते हैं. मैं जब कुछ चीज लिख देता हूँ तो लोग जब उसको पढ़ते हैं ना तो उनके अंदर ख्याल आता है कि अरे, अरे ये क्या हाँ लिख हाँ दिया. हाँ, हाँ. तो ये क्या लिख दिया, मतलब दे stopped for a while. They analyzed कि भाई जस्ट बिकॉज इसने I chase that. इसने बस वर्ड्स को जोड़ के एक स्टेटमेंट बना दिया कि डज ही रियली लेकिन मीन्स फिर समथिंग. भी ये क्या लिख दिया, हाँ लाइक. एग्जैक्टली exactly. जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा आइडिया लिखा था, अब मैं इस चीज को बहुत डीपली मैं बता सकता हूँ मैं क्या सोच रहा था, एंड इतने सारे चीज को हाँ मैंने फंक्शन करके एक नॉर्मल से सेंटेंस में लिखा, विच वाज बिल्डिंग अ स्टार्टअप इज द फंक्शन ऑफ केओस. ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है. Now, this from an engineer's perspective is a very big thing. From an entrepreneur's perspective, it's a very big thing. But for normal people, it's nothing but छह word into a sentence. Just for the sake of tweeting, I tweeted. तो जिन सही लोगों सही. के पास ये पहुंचना चाहिए था उनके पास वो वैसे ही पहुंचा कि ओके, बिल्डिंग अ नाइस. स्टार्टअप इज अ फंक्शन ऑफ केओस. आप इंजीनियर्स के माइंडसेट से सोच सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मेरा हमेशा से वो वाव फैक्टर देने वाली चीज थी. एंड व्हाट हैपेंस कि मैंने कहा ना वो लाइफ टाइम के लिए रह जाती है वो ऐसे टाइप ऑफ फीलिंग कि अरे यार मैंने ऐसे पढ़ा था. एंड मैं वो फिलोसफी अपने कंपनी में भी फॉलो करता हूँ. मैं वो चाहता हूँ कि लोगों को भी पता चले, वो जैसे अपने हमें लिए भी फॉलो मूवीज करें. मूवीज से लग जाती है लाइफ टाइम हाँ, के लिए. आई लाइफ आई आई टाइम के लिए. एक्चुअली चीज दैट इज व्हाई आई कनेक्ट विद यू अ लॉट. लाइक ये वाली फिलोसफी और ये सारी चीजें बड़ी सिमिलर है हम दोनों में कि आई मेरा ना आई व्हेन आई एम रिसर्चिंग, लाइक आई मेक अ टॉपिक. ठीक है, मेरे को एक टॉपिक होता है कि यार आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हाँ, दिल्ली मेट्रो किसमें हुआ क्या था एग्जैक्टली. आई वांटेड टू राइट. क्रिएट एन engineering side से thread, although वो हो नहीं पाया, but still I was very curious. I understood deep parts inside it, deep business structures, and जो कि मैंने simplify करके लिखा उसको. तो उसमें पढ़ते हुए सुनते हुए पॉडकास्ट तो नहीं था उनका, उनकी स्पीचेस थी, बुक्स पढ़ी मैंने, 2 बुक्स पढ़ी थी उस टाइम पे. एंड उसके बाद द द रॉ थॉट्स दैट आई गॉट, लाइक इसको एक फॉर्मेट में बनाना है, इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाना कि यार ये लाइक दीज टू थिंग्स दैट ही डिड एंड देन दिस वो जो फॉर्मेट में बनाना, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली लव्ड, दैट इज व्हाट आई एंजॉयड. तो मुझे मुझे वो चीज, वो जो रश है ना, एंड देन दैट गेटिंग एक्नॉलेज्ड is kind of like a good feeling. Even if it's not acknowledged, it's okay. Like It got Netflix वाला acknowledged, was which a, was like big, like सोने पे सुहागा type, a win-win हाँ हाँ situation from kind of. both the sides, right? Exactly. तो वही है, good content will get some kind of distribution. If you can tweak it for distribution, वो पागलपन मच सकता है, ठीक है. हाँ, क्योंकि क्योंकि लोग नहीं बनाते अच्छा कंटेंट यार, नहीं होता. जब भाई. आपने एक बार बना दिया ना तो वो पहुंच जाएगा लोगों तक. हाँ, इट हैज अ हाई मैं चांस मैं ऑफ रीचिंग दोस. मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि मैं जो चीज सोच रहा हूँ लिख रहा हूँ, दिस इज प्योरली इनटू माय लेगेसी थिंग. मैंने एक चीज डिफाइन कर दी थी बहुत इनिशियली व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल अकाउंट, एंड स्मॉल इज डिफाइंड बाय द वैनिटी मेट्रिक दैट वी डोंट वांट टू चेज. व्हेन आई से स्मॉल अकाउंट, इट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट कि मैं लोगों को नहीं बताना चाहता था कि मैं कैसा हूँ. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई सेड, आई थिंक वी डिस्कस्ड कि भाई मैं एक ऐसा प्रोफाइल पहली बनाऊंगा ना. स्पेस में. हाँ, मैं एक ऐसा प्रोफाइल बनाने वाला हूँ जो आगे जाके लोग मेरे ट्वीट्स उठा के जोकर की फोटो लगा के ऐसे कोट लिख के लिखेंगे सब. तो देख, आई डोंट नो, कॉल इट लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, अ चाइल्ड्स ऑब्सेशन. मैं चाहता हूँ कि जोकर जैसा कल्ट जो है ना वो V1 के लिए भी बने. वाई? बिकॉज इट्स हम्म. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू डू इट बिकॉज फिक्शनल कैरेक्टर एंड ऑल. तो मैं फिक्शनल कैरेक्टर से आपको वाकिफ करा ही नहीं रहा. हाँ. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो चीज उसने बात की थी उससे क्या रिलेटेड है रियल लाइफ में जो एक्चुअली है. लाइक देयर इज अ मेरे कंटेंट की थीम मैं बता सकता हूँ व्हिच इज लाइक नथिंग. Like there's no theme. That's why I can put everything in it. My content
स्ट्रैटेजी, थीम, स्टाइल इज ब्लैंक अबिस। तो मैं उसके अंदर कुछ भी कलर डालूं वो मेरे हिसाब से बन जाएगा। दैट इज द पावर दैट आई हैव। दैट इज व्हाट आई वांट टू शोकेस टू द पीपल। जोकर की जो चीज मैं बात 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 बताते रहता हूँ भाई, मैं जिफ भेज देता हूँ लोगों को कि हाय, या आई 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 वांट द वर्ल्ड टू बर्न, लेकिन आई आई कैन वॉच द वर्ल्ड बर्न एंड ऑल दैट। उसमें एक मैं इतना बहुत पागल नहीं हूँ, नहीं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाता मैं। अब मैंने कहा हाँ, ना, वो चीज थोड़ी हाइपर एक्टिवनेस की वजह से मैं हूँ ही वैसा। लाइक यू नो, उस लाइक पे हाँ। बहुत ज्यादा फास्ट पेस, ये करने का, ऐसे करने का, ये वो। तो उसमें ना एक बहुत पर्टिकुलर सीन होता है जहाँ वो एक्सप्लेन करता है कि जो ये सिविलाइजेशन का ब्लैंकेट लेके लोग चल रहे हैं ना, वाई दे आर डूइंग इट, बिकॉज सोसाइटल नॉर्म्स बने हुए। सोसाइटी जब से आप पैदा होते हो ना, आपके सामने एक स्क्रिप्ट रख देते हैं कि आपको ऐसे 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 चलना है। The society that you live in has created that kind of norm for you to follow without being estranged. The moment you become estranged out of that particular script, you're called a retard, you're called a misfit, you're called so many words which disregards you of your existence. जो कभी ये बोलता है कि like this everything is part of the plan. What happens like if something goes wrong, which goes out of the plan? Everything becomes chaos. And that is the philosophy, the theory that I want to preach people, कि आप acceptance में रहो, आप delusion में मत रहो। You accept the fact कि ये सब एक part of the script है, ये सब एक part of the plan है, जिसको आप follow कर रहे हो bound down करके, slave बन के, which you can't escape, accept that. I can say that because I've escaped it. मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो चीजें हैं, वो मैंने escape कर ले है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। That is why I डिस्पाइज दो शैलो हॉलो पीपल जो अपनी आइडियोलॉजीज के साथ हिपोक्रेसी करते हैं, हर बार बोलेंगे कुछ और, फॉलो कुछ और करते हैं। दे हैव सम डिफरेंट डिलूजनल माइंडसेट व्हिच इज लाइक पर्टिकुलरली दोस काइंड ऑफ किड्स जो इन्फ्लुएंस होते हैं बड़े लोगों से, राइट? स्टीरियोटाइप्स We बना never देते want that. We हैं। never आई want, नेवर, या हम अपनी डेफ community में भी we always question them, like why do you, like why don't you question us, and we एग्जैक्टली। always prefer, like Ananya, I have to mention her because I really love that confrontational nature of hers, because you have to question the person, ठीक है? And आई अच्छा थिंक लगता है यार, लाइक ऐसा लगता है कि यार कोई ना यूनिक है, दे आर नॉट बाउइंग डाउन टू यू, एंड सम पीपल आर जस्ट काइंड, ठीक है? लाइक सम यू, पीपल आर जस्ट काइंड एंड हाँ, बट आई नेवर बाउ डाउन टू एनीबॉडीज आइडियाज, लाइक यू आर वेरी ब्रूटल विद पीपल, आई एम काइंड, बट आई एम आई एम, काइंड टू माई इनर सर्कल। आई कैन नेवर बी yes काइंड you are kind, pretentiously kind to like the world, no, but I'm but very kind to my inner circle, which is like very few people. I am, my thing is I'm kind to everyone in general, but and I'm, but इसका मतलब ये नहीं कि I never question people, like I always do, like मैं काइंड हूँ, लेकिन यार जब कोई बकवास हो रही होगी, तो चाहे हम्म। वो बहुत ही बड़ा क्रिएटर हो या बहुत ही बड़ा इंसान हो, जो भी कर रहा है, टॉलरेंस नहीं रहेगी, सही बात। टॉलरेंस, हाँ, वो जैसे नहीं, तूने और अनन्या की बात की ना, ये चीज वहां से भी हाँ, है। लाइक द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट वी क्रिएटेड इट समवॉट इन द lines and the fashions of Ananya's. We can like take it अनन्या, as a हाँ, शी placeholder इज द ले लेते हैं परफेक्ट लिसनर, एंड पता है उसने हमारा पॉडकास्ट सुन के कहा कि कि अच्छा लगा। उसने कन्फ्रंट नहीं किया उसमें, एंड आई वाज he लाइक ओके, this नाउ is वी आर something that हिटिंग we, द ऑडियंस। हाँ, the thing is ना कि बहुत सारे traits हो सकते हैं किसी के अंदर बहुत अजीब हो, which might not be aligning with yourself, but the या way Ananya has presented herself, which is like a blank slate. तो देखो क्या होता है कि I'm a person who can like claim कि I have this superpower where I like check anybody's depth with like my feet, my single feet. ठीक है, या where I give them the playground to be so vulnerable कि I know what kind of person you are. I do this with everybody. I don't know. It's just me and my यू ट्राइड reality दैट विद मी distortion field. आल्सो। That's why we exist right here. We're doing a हाँ। podcast. And when I tested Ananya, I like recently did it. अभी अभी खत्म हुआ होगा 1-2 घंटे अभी भी। पहले, जिसमें I I want them to believe कि you have the wheels, you're the one driving the car. Because then what happens? Then it depicts, like then it showcases कि what kind of
tendency you have when something is is in your control. And how can you judge a people when simply by giving them the control of the conversation? Right. If you give the control of the conversations in someone else's hand, like the rein of you being riding it to someone else's, at that exact very moment you know what kind of person you are dealing with. Yeah. There Exactly. can be, and I think I tested her already. I know what kind of person she is. But talking from the OMT's point of view, she is the right kind of audience that we're trying to cater. Why? Exactly. Because Exactly. the way I tested her, she is a person who has a lot of notions which is being bursted by each and every conversational conduct that we have. And she is ready to revive it or revise it every time it comes to her question. Even though at some points, just because of her nonsical age, she will act as a rebel. But throughout the the journey, she'll understand that this is what it means, like this Yes. is what it is, and that is the type of audience that we want to reach, and we can make them reach there where we want them to reach. We And OMT is all about that. Like if you hear our first exactly. podcast, you'll see two different people. Not We just because of the haircut uh, and dadi cut. Yeah, like this is beard and that is not. This this is this looks cool, yeah. This looks cool, but just saying, like there's a difference between a beard and a. We'll discuss that later. But अभी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. I love the people we have in the community. Yeah, Like I कुछ I कुछ can लोग I can हैं agree जो to it तो because I I you don't want don't it. like everyone, but Yeah, even I don't like everyone, but कुछ everybody is trying to learn and do better. I So I am think very excited by the fact that we have the power to change the behavior of the consumption that the people in our group have. I exactly have their seen feeds the have changed. Everything yeah. has changed. Like मेरी मतलब वो कहते हैं ना कि if you want to change Twitter the should world, pay change us. yourself. Imagine this is a free platform. Everybody keeps saying this about Twitter ना. Like whenever some great threads comes on, तो मैंने ये चीज देखी है कि the what would happen there is this particular uh, saying कि if you want to change the world, start with changing yourself. I think it's bullshit. It's like you just showcase the world how you're going to change it and they'll do it for you. And this is more Yes, like yes. a visionary entrepreneurial Interesting. kind of mindset, but this is true, it works. If you can make someone believe that whatever you're doing, it's like part of something very big, bigger than you, his idea, her idea, bigger than something that you can never imagine of, that is like limitless. It's like wow, for me, it's wow. And what we did with the OMT community by making them realize the potential of the consumption that they're doing, I think we already crossed the uh, expectations, which you technically don't have. But still, we had something. We need to change that kind of stuff. If we can Yes. actually change the behavior of people that we are with, that's Yeah. everything we wanted. We already crossed what we wanted, and now we're just doing it to Exactly. enhance it. I love when people And come to we us and in the group and say कि यार ये नहीं ऐसे change कर दे, this thread might work in this way, and it was like the most like interesting. interesting thing that happened to me. Like this is something that we are known for. Uh, This is what uh, we do whole day, but now people are this taking up is charges, this is and community. this is This like is community. super, This is the super. real essence of community. It's not like दो लोग ऊपर से आके आप पे बोल रहे हैं. हाँ, Although हम yeah. चेज तो वही करते हैं करना. It's nothing but our लेकिन narcissistic behavior. वो हमेशा से ही रहेगा. I बस think it's वो तो है थोड़ा सा. हाँ, वो नहीं चेंज होने as वाला. बट part of मजा being a मजा नहीं आता. लाइक नार्सिसिस्ट होने में ना अल्टीमेटली देयर इज नो प्लेजर. लाइक इट्स अ हैबिट. इट्स देयर इज नो हाँ. प्लेजर इन इट. लाइक प्लेजर उसी में आता है जब कोई कन्फ्रंट करता है आपको. तभी हमें मजा आता है अनन्या के साथ. ठीक है. Because you know आ- आ- you gave us हाँ, the challenge of why we started on the first place. कोई भी Because no पेडेस्टल पे one बिठा देना आपको, हाँ, मुझे मुझे उसके पसंद नहीं साथ था. मजा मैं नहीं उसको आता. पहले तोड़ता हूँ कि तूने ऐसे क्यों बोला. मोस्ट ऑफ द लोग जस्ट बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ हाँ, लाइक करिश्मा, द ऑरा, कि लोग मुझे आके बोलते हैं सर आपने ये कैसे किया. सबसे पहले मेरा रिएक्शन ये होता है सर भाई अपने गाली भाई नहीं बाप को गाली. बोल देता कि
क्या कर रहा है मेरे सामने सर्वर मत कर। बिकॉज मैंने ना, मैं ये चीज चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ ना कि अपनी कंट्री इतनी ज्यादा इंस्लेव्ड रही है ना कॉन्सेप्ट से, कि दे हैव दैट काइंड ऑफ लाइक बाउ डाउनिंग कल्चर। होनी चाहिए, बड़ी चीजों की होनी चाहिए, समथिंग दैट इज लार्जर देन यू, योर लाइफ, समथिंग दैट इज better than, like, like something very uh Oh, हाँ. I don't remember what I was saying because it got lost in so many. Oh, हाँ, the only कोई thing नहीं. that I'm trying to make, the point that I'm trying to make very fluently is, हम्म, जो चीज हम अपने लीडरशिप में दिखाते हैं, which is like confined between 10 brains, we just took that kind of superpower that we practiced, that we, like, catered by burning the midnight oil for so many years, and now we published it into the open world, and it's being हम्म, validated, like it's being, वो जो proof of work हमने एक टीम के साथ किया, कुछ क्रिएट किया. बनाया, we created something, we invented something. That's the most beautiful that I appreciate. Why? Because as being a creative individual, as being an artist, as being a inventor, creator, entrepreneur, that thing that you can do with 10 people in hand, you did it with like 40, 50 people. Can you just imagine 40, 50 people sitting in front of, like, most of the people don't imagine. मैं तुमको numbers की power बताता हूँ, not in the vanity metrics के way में, but in a way where you need to visualize stuff. आर्यन, तेरे followers कितने हैं अभी? The number, the exact number. But 28,500. 28,500. Imagine कर sir. हम्म. You can fill a stadium with 28,500 people. That is the power of number. Just imagine कितने लोग तुझे देख रहे हैं. Like, this is the power of identity capital being invested and being returned in a way. Yes. अब हम थोड़ा नीचे आते हैं औकात पे. मेरी हाँ. ऑडियंस है 4,500 की. Imagine 4,500 people collected at one Exactly. particular place. Exactly. It's a very huge number. This is the power that I'm trying to showcase. And the beautiful thing with me is कि मेरी जो 4,500 की ऑडियंस है, इनको मैं पर्सनली जाके भाई वो करके आया. Even though just because of the algorithm, I never get chance to flex that thing. But these are हाँ. those people जिनके साथ मैं one on one interact करके बनाया है चीजें. इंटरेक्ट कर. हाँ. Everybody that comes up to me, they're always looking, they look at me, look up to That's me the as a person that special. might has the person, he is the person that might have an answer. This is the brand recall that I Exactly. have. And that's Which, that's what we do with OMT as well. Like we exactly, get like one person is added to the community, like hand picked. handpicked. 41 लोग हैं अभी community में. We started तुम with लोगों को 7 लग रहा होगा members, कम है. the We lucky started with number. 7 members and we were the same back then. Like Yeah, हमने ना अपने माइंड ने ना सही बना लिया है ना. हमें मेट्रिक्स और नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. I'm like 41 people are getting affected by the shit we are doing. Like what better do that's, you, like what more do you want? We have around 124 subscribers right now. I don't know if they, like I want slow growth. ठीक है, हम आराम आराम से इसको ग्रो करें, वही मैट डेवेला वाला. बट yeah, आराम आराम से इसको ग्रो करें. कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं कमाना, हम कोई खत्म नहीं हो रहा हमारा. एंड एंड वी वांट टू ग्रो स्लोली, get there, get I to those always, accurate people and create good content. क्रिएट नहीं कर रहे हम बैठ के, हम आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, डॉक्यूमेंटिंग या व्हाटएवर, बट yeah, वी आर एक्चुअली, आई थिंक आवर पॉडकास्ट इज एक्चुअली वेरी गुड. उस दिन मैं रात में ना सो नहीं पा रहा था, तो मैंने ऐसे चला के अपना सुनना शुरू किया. And I was like, this shit is good. And I'm good not talking like a in a narcissist, okay? biased way. But I Yeah, was it's actually liking it. I was enjoying. And I love this conversation because we love this conversation. इसलिए ये बहुत अच्छा निकल के आता है. ठीक है? क्योंकि And as I said, this हाँ. is effortless effort. The first principle that I introduced in the conversation. अगर वो effortless effort नहीं, it's not going to like work any way around. Formula One races में effortless effort दिखता है. They've practiced themselves so much कि whenever they sit in the car, they know कि मुझे भाई भगाना. It's not an effort कि
what is going to happen? They never care about the finishing line. They care about the tracks. They care about where they're racing, what kind of adrenaline that they're going to feel. And for me, observation, creativity, artistic pleasures, aesthetics, this is what gives me that kind of What adrenaline, the kick, and I get it. that is what being showcased with whatever we present. You call it content, I don't call it content. I call it something, a word that has never been invented before. I'll call it that. Which has no form, it's fluid. So Got it. something that And most पता है, एक चीज पता है, Mhm. we are very like in the very early stages of the internet content अभी बस start हुआ है. Even though हम बोल रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा हो गए, अभी बस Mhm. start हुआ है. Because ठीक we है. got exposure very late, so now you don't understand कि कितना impactful है if you just be at the right place at the right position. And how do you get there? By the slow growth that we're talking about. Slow growth. Not with Slow obligation, growth but with is, not with obligation, but with obsession. Like if you have the obsession to what do we mean just by slow growth? Slow growth is basically a strategy in which you are accurate and deliberate with what you do. We are extremely deliberate कि हमें ऐसे ही लोग चाहिए अपनी कम्युनिटी में, है. वी आर नॉट क्रिएटिंग एक्सक्लूसिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्सक्लूसिविटी कि यार हम ना Mm. इन्हीं लोगों को बेच सकते हैं. वी डोंट केयर अबाउट बिजनेस हियर. वी विल क्रिएट अ बिजनेस बट विद दीज पीपल. and and when you see us with like बहुत ज़्यादा community members, you'll be like, yeah, when they were at 41 they were talking like that. uh, it's still going उनको to be like that. That is never going to like change. For me, it's never that is going to never change. going to क्योंकि change because as हमें you फर्क said नहीं ना, पड़ता. पड़ता है तेरे को फर्क? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मेरे से पड़ता तो हमें. पूछ रहा है जिस बंदे ने लोगों को अपने पास आने नहीं दिया बिकॉज ऑफ दिस वन थिन लाइन विच इज कॉल्ड द बॉर्डर ऑफ शिट पोस्टिंग एंड actually like talking his thoughts out. So आई थिंक ये हमारा अभी तक का बेस्ट पॉडकास्ट है. इसमें हमने जो कनेक्ट किया ना वो आई थिंक बेस्ट वे से किया. आई con- डोंट नो, पता नहीं निकल के कैसा आता है, मुझे नहीं पता. बट आज मेरे को the एक्चुअली ये conversation was प्रॉब्लम थी. beautiful. It was. हाँ, आज मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम थी, ये जो मेंटल प्रॉब्लम थी टू लाइक मैं कर तो रहा हूँ बट क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊंगा इससे, जो मेरे गोल्स हैं कुछ एज अ क्रिएटर, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा. इट्स नॉट मेट्रिक ड्रिवन गोल प्लीज. क्या मुझे जैसे हिट करना है लोगों को, मैं हिट कर पाऊंगा, मेरे को ये लगता है बस. एंड आई थिंक आज की कन्वर्सेशन से माय माय माइंड गॉट क्लियर्ड. सो अगर कोई मेरी सिचुएशन में हो या मेरी सिचुएशन में ना भी, थोड़ा सा अलग सिचुएशन में, आई थिंक वो भी We just समझ gave सकता है that kind इसको. of perspective where you'll have time to think on and Yes. analyze Spend ki time after this. Spend hmm, 10 minutes thinking. Like just lie down, close your eyes, think. Like that is, पता है यार लोग इस टाइम को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते. एंड दैट्स वेरी लाइक मैं भी ऐसे ही करता था बट अब मैं बहुत ही सोचने लग गया चीजों पे. I've stopped. I've started thinking. I guess I don't know मेरे पे कैसा असर हुआ है, but if I can have an असर on you, so like the people who are listening to us, just stop for a while, 10 minutes after this, and think about it. Think sometimes like it's even okay if it's to not related to content, just think in general. I don't know how many people come till this point in the podcast. If you do, you are special to us, and yeah, we are special to you. ये इसके words तो हैं. एक I can't एक say एक it. रिलेशन बन गया है कि but It's beautiful to watch the way we bridge our conversations now. We like have it's like a roller coaster. Imagine the tracks of a it's roller we coaster can't having create it ups again and and again yeah, exactly. with This is like anybody else. once in a blue moon kind of stuff. Yeah, and we can't create it again and again with other people. I try And having conversations, तभी मैं OMT के ना बहुत sanctities को protect hmm, करके रखना चाहता हूँ. I don't want a lot of people here. I yeah, want people who are extremely close with us, हैं जो हम दोनों से close है. जैसे ही हम जसकीरत को लाने वाला है, we'll talk shit. ठीक है, अब बहुत सारी बातें करेंगे, but I three want to startup protect guys talk about. 3 startup guys. बट मजा आएगा उसमें भी, चिल. लेकिन भाई Hmm. हमारा चिल कितना मस्त है यार, ये डिफरेंट टाइप का चिल है, ये एक्चुअली माइंड You'll को खोल देता है. अभी मेरा माइंड खुला this is that kind of chill जो like आप ना सोफे पे बैठ के like
आराम से एकदम अपने अपने पोजीशंस कंफर्ट जोन में बैठ के ये जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग. दिस इज नॉट इवन लाइक obligation for us. This is nothing but brainstorming. Simple, sweet and simple. कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं thought, है, ये इट्स thought, लाइक yeah. अरे it's like a mind map created, net web हाँ create हो रहा है. तू देख रहा है like वेब. different हाँ ideas को हाँ different webs हैं. हाँ. Decentralization of ideas is so beautiful. हम्म, Like हम्म. wow. This Basically, if segment you're of content is different because there's one thing, like people segment their thing in two ways. Like one thing is intelligent content which you have to consume in the mornings. ठीक है, फिनफ्लो का content भी ऐसा वाला हुआ है कि which yeah, you have to लेकिन रात तक आते आते you consume things like हाँ relax, but we relax. are in that middle point. ठीक है कि यार we are relaxing but this is a Our conversation. relaxing is what we do in the morning. Like that is the thing that we Exactly. do. That तो we भाई टाइम trying पे उठ to. जाया कर पहले तो मैं क्या भाई बोल रहा हूँ, मैं मैं उठ भी जाता आजकल हूँ. टाइम पे नहीं उठ रहा. मैं उठ जाता हूँ भाई. आई एम वेरी मच अकाउंटेबल. आई एम ओनली 30 minutes late to what we decided, which is like 6:30 a.m. I wake up by 7. आज ना, कल हर दिन. परसों कोई भी हर दिन. टाइम तो फॉलो करता झूठे. तो ये सारे ओएमटी कम्युनिटी वाले वो कर सकते. 4 बजे तक इन लोगों की चैटें चल रही थी. भाई आई एम जस्ट brutally destroying people. That's it. And तो I आई थिंक want to 5 मिनट्स thank बचे अब. all the, yeah, just all the 1% जिनको मैं कहता हूँ like you're the 1% of the 1%. I gave you this title because you deserve it. You're the top notch consumers, the top notch people of the community. One more thing, क्योंकि हम हमारे ऐसे फायरी, हमारे ऐसे लाइक हैवी थॉट्स को टॉलरेट करना इज आल्सो वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन इन अ वे. बिकॉज आप किसी के साथ फायरी बट अटैच हो जाते कामिंग. हो ना. वाओ. दिस कुड बी लाइक I'm very great at copywriting guys. Just saying. मैं अपनी इसको हायर कर लेना. पीपल कंपनी, हायर पीपल कंपनी फॉर कॉपीराइटिंग. द तो पीपल कंपनी, सॉरी. the people company, exactly. The is a very special element to all the people that we're trying to like build personal brands for, but यस. promotion हम यहाँ नहीं करते. नो नो. The thing is that this message is one on one for all the members that we have for OMT. कि just because you see us, learn from us. Like you can glorify us, vilify us, as the great Steve Sir said. Ignore us for the matter of fact. But Like you remember ignore one, my tweets. no comments. You can ignore my tweets as well. I know you're going to be come back. You will come back there, just like any other comeback story. We As I know, said, we people see love you. comebacks, and I I don't know. I think it's I am not very good at goodbyes, so I'm just going to say कि चलो. I'm glad कि you stayed till the end. And this was one of the most chillest podcast we did till date, which is like the 4th episode of OMT. One more OMT. thing, I don't know what the title is going to be. It's so fluid. And I yeah, want to do one more such session. In the future, अभी तो एकदम वो but करेंगे. okay. Yeah. And Yes. what I can do, I can just give you a call to action thing. Well, we'll just wrap it up. We'll do a Q&A, like a very basic humane, not very fancy, very basic humane Q&A. You can ask whatever you want, whatever it may be, explicit or NSFW or something very brutal, something very subtle, something very beautiful. All genres are accepted. You give us all of your questions. You can connect us with us on LinkedIn, Instagram, Twitter. The handles will be mentioned in Yeah. the box Or note. just comment down. You can comment down all the questions. We'll We'll go talk through about it in the everything. next And the next podcast. video will be OMT's Each and Q&A. every question. We'll discuss everything. Let's see कि कितना humane हो सकते हैं लोग अपने ideas के साथ. How well they connect with us. And yeah, I think that's the call of like, action. उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई लोग, प्लीज दोस्तों में, एज अ फैमिली मेरे को ये में, मैसेज कर रहा ग्रुप्स है में. कि प्लीज बोल. तो प्लीज प्लीज यार आई मीन तो ये कर देना. ठीक है, लाइक बहुत कर देना, मुझसे बहुत हेल्प होती है. ये यूट्यूब को चाहता है लोगों को. एज आई सेड बस एल्गोरिथम इफ का यू वांट टू
if you want to become a part of the OMT special OMT community, please message Vivan on Twitter. नहीं नहीं उसको मत करना, मेरे को ही कर देना. Message me on Twitter, Aryan Gochar. Yeah, And and yeah, we'll I see you think on हो गया our हमारा. GC. For now, हम like देख रहे हैं Yeah, कि इसको कहाँ उठा के लेके जा सकते हैं, because we know the art of let's see. funneling people. For like nearest to the what we can do, we are going to do newsletter on WhatsApp, which is like the most Hmm. closest thing we can come to. But yeah, let's keep that action item for the next time. Until then, like, share, subscribe, जैसा बोल दिया. And these kind of chill Yep, podcast is what we do. OMT is known for. The that's end what of you the do. session. So yeah, and I'll see you Bye. again. Bye bye. Adios. Bye.